क्या से क्या हो गया. Hello, all you footy lovers. Welcome to this special top 5 edition of Club Football. Yes, as you know, transfer window का time चल रहा है and already this summer we have seen some big name players joining club for huge amount of transfer fees, particularly Saudi Pro League में जहां पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है. Players are being signed and only time will tell which of these players will eventually go on and become great in the league. लेकिन इसी बात पर आज हम जो काउंटडाउन करेंगे वो होगा फुटबॉल इतिहास के 5 सबसे बड़े फेल्ड ट्रांसफर्स. येस, देयर इज नथिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स. येस, डोंट गेट मी रॉन्ग, यहाँ हम प्लेयर की क्वालिटी पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, बट ये वो ट्रांसफर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ा सम इन्वॉल्व था, बहुत एक्सपेक्टेशन थे, बट इवेंचुअली वो ना चले. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट अ काउंटडाउन फॉर द टॉप 5 फेल्ड ट्रांसफर्स इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल. So we start with number 5, and I guess every Manchester United fan will agree with me over here. At number 5 we have Harry Maguire. Harry Maguire. तो हैरी मैग्वायर का नाम सुनते ही यार एक चेहरे पे हंसी सी आ जाती है. There was a time in 2019 when Manchester United signed him for Leicester for an approximate figure of 80 million pounds. He was the most expensive defender in the history of the game. Yes, 2019 में जब मैग्वायर ने यूनाइटेड ज्वाइन किया, the start was decent. He was good enough in the earlier games, but as time went on, यार उनका फॉर्म तो डिप होता रहा. इतना डिप हो गया कि उनके नाम के मीम्स भी आने लगे. There were at times that his defending were referred to as comical, amateur, and as soon as Eric Ten Hag came into the United dressing room, यार हैरी मैग्वायर की तो छुट्टी हो गई. He fell back in the picking order. Even though he was a constant starter for the England national team, he was decent enough in the World Cup in Qatar in 2022, but club level पे हैरी मैग्वायर वो कमबैक नहीं कर पाए. और अब जो खबरें आ रही हैं कि eventually Manchester United are about to sell him. So at number 5 is none other than ex-Manchester United captain Harry Maguire. So now we move on to number 4, जो के हैं So it was Ousmane Dembele when Barcelona signed him in 2017 for an approximate figure of 140 million euros. Yes, with add-ons, जो उस टाइम का second most expensive transfer था after Neymar. He came on with a big reputation, having played for Borussia Dortmund. He was in the French setup in the World Cup as well, and he was destined to be a great replacement for Neymar. But इंजरीज ने तो उनका पूरा बार्सिलोना करियर ही ख़राब कर दिया. देयर वर ग्लिम्पसेस ऑफ हिज टैलेंट इन द इनिशियल टाइम, बट इंजरीज आफ्टर इंजरीज केप्ट हिम आउट ऑफ द बार्सिलोना सेटअप. यहाँ तक कि ऐसा हो गया था कि उनके दोस्त भी उनसे मिलने क्लब में नहीं, क्लब की क्लिनिक या हॉस्पिटल जाया करते थे कि वो इतनी इंजरीज से परेशान थे. और इवेंचुअली Barcelona have decided to sell Ousmane Dembele. He might go on to join PSG, but the sum of transfer that was involved, उसके against जो हमने Dembele का performances देखे, जो उनके appearance थे, he will go on as one of the flops in Barcelona history. So at number 4, Ousmane Dembele. Now at number 2, यार फिर से बार्सिलोना का नंबर है. यहाँ इन्होंने तो फ्लॉप ट्रांसफर्स की तो लाइन लगा दी, एंड आई गेस आई एम नॉट इवन इंक्लूडिंग एंटोन ग्रीजमैन इन दिस लिस्ट. Yes, number 3 is when Barcelona signed Philippe Coutinho from Liverpool for an approximate figure of 140 million pounds. Yes, that was the sum of transfer involved. Premier League fans तो जानते ही होंगे, Coutinho was a huge star for Liverpool while playing all those years for the Merseyside club. He achieved some great figures, great numbers, and जब January 2018 में उन्होंने बार्सिलोना साइन किया, he was again destined to replicate the same form for the Catalans. But initially few months struggling के बाद eventually उनका एक relationship भी fans के साथ build नहीं हो पा रहा था. The pressure of that
price tag was huge on Coutinho. He was struggling with injuries, with form, and within 2 years Barcelona in fact even sent him on loan to Bayern, जहाँ again वो अपना फॉर्म नहीं दिखा पाए और eventually he had to come back to Premier League and play for Aston Villa. It was such a great dip from the top to the bottom for Coutinho. So at number 3 we have Philippe Coutinho. Now at number 2, यार इनको ये लिस्ट में अगर नहीं डाला तो फिर क्या लिस्ट ही बनेगी. मैं बात कर रहा हूँ द एक्स प्रीमियर लीग स्ट्राइकर रोमेलू लुकाकू, जिन्होंने सेरिया में इंटर मिलान के लिए भी खेला है. बट when he came and joined Chelsea back in 2021 for an approximate figure of 97 million pounds, yes, that was the biggest transfer in British football at that time. Lukaku was wanted revenge. Yes, he wanted to get back on Chelsea fans because Chelsea ने ही उनको इनिशियली बेचा था. जब वो एवर्टन गए थे वहाँ से मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए साइन किए थे. यूनाइटेड में वो नहीं चल पाए थे. He joined Inter Milan. He's great, scored some great goals at Inter, and eventually Chelsea had to sign him back. But क्या season था वो? Yes, he couldn't even get into double figures for Chelsea in that season. He struggled all through, and within 1 year, Chelsea had to send him back to Inter Milan. और अब तो ऐसा भी हो गया है कि Chelsea don't even want him back. Inter Milan are not happy with Lukaku. There are rumors that he might go on to join Juventus. बट इतना ट्रांसफ़र फ़ी इन्वॉल्व होने के बाद लुकाकू इज़ गोइंग टू बी इन आवर लिस्ट एट नंबर 2 ऑफ फेल्ड ट्रांसफर्स. सो नंबर 1, well, no prizes for guessing. I am little disappointed by having this player on the list because he was at a time my favorite player even though he played for my rival club Chelsea. हम बात कर रहे हैं ईडन हज़ार्ड की. जब रियल मैड्रिड ने उनको साइन किया था इन 2019 फॉर अप्रॉक्सीमेट फिगर ऑफ $100 million विच इवन वेंट ऑन विद एड-ऑन्स, he was about to become the best player in the world with that move. Yes, Chelsea में तो हम जानते हैं how he took the Premier League by storm. He was the one of the best players in the world during his time with Chelsea, and ये उनका dream था to go and one day play for Real Madrid, but वो dream तो अधूरा ही रह गया. क्या से क्या हो गया. इनिशियल फेसेस में इंजरीज, कम बैक हुआ बट वो फॉर्म बिल्कुल रेप्लिकेट नहीं कर पाए. फिर इंजरीज हुई एंड इवेंचुअली ऑल ऑफ अस वेर डिसअपॉइंटेड टू सी व्हाट ईडन हज़ार्ड वाज अप टू एट रियल मैड्रिड. एंड एट द एंड अब ये खबर है कि रियल मैड्रिड एंड ईडन हज़ार्ड हैव म्यूचुअली टर्मिनेटेड द कॉन्ट्रैक्ट. बट one of the biggest heartbreaks, one of the biggest flops, you will agree with me, the biggest flop transfer in history of Real Madrid, Eden Hazard. So that was the list of top 5 failed transfers in history of football. If you agree with me, please put up in the comment box. अगर आप agree भी नहीं करते हैं, आपको लगता है कोई और players होने चाहिए थे, please do comment and don't forget to like this video, to subscribe us, and for more such videos, keep watching Club Football, keep playing the beautiful game, and until next time, bye bye.